गुड इवनिंग ऑल। चलिए दोस्तों इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 विद रेफरेंस टू नासा's मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मेवन मिशन consider the following statements. See why we picked up this question, because recently NASA lost its connection with the MEVN mission, right? So look at the first statement. MEVN was launched in 2013 and entered Mars orbit in 2014. Absolutely correct, right? In fact, both MEVN and Mangalyaan mission, both were launched in 2013. Like mission Mangalyaan, it was launched somewhere on 5th of November 2013 and it entered into Mars orbit in 2014, right? So दोनों concurrent missions हैं. So first statement is absolutely correct. Look at the second statement. MEVN primarily studies the lower atmosphere and the surface geology of Mars. No, that's not correct. It's not the lower atmosphere but the upper atmosphere, right? So the second statement is incorrect here. Look at the third statement. In fact, third statement को अगर हम read ना भी करें, so look at this one. Which of these statements given above is obligor correct? करेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ स्टेटमेंट्स. अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट. दैट मीन्स बी, सी एंड डी ऑल आर रूल्ड आउट एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, right? But let us examine the other statements as well. So MEVN examines how the solar wind, solar radiation interact with the Martian atmosphere. Absolutely correct. And MEVN was originally planned as a 2-year primary mission, right? So all these statements are correct here except the statement number 2. Now let's move on to the explanation part. MEVN does not study surface geology or the lower atmosphere. Its scientific focus is on the upper atmosphere, ionosphere and exosphere of Mars, right? Do remember all these areas and why we picked up this question. Because of this reason, NASA lost its contact with the MEVN, which reached Mars with the Mangalyaan, right? I hope you guys understood. So now let's move on to the next question. So question number 2, with reference to the World Anti-Doping Agency, consider the following statements. The first statement says it was set up in 1999 as an independent international agency to promote doping-free sport. Absolutely correct. Second statement says the headquarters of the WADA is located in Geneva, Switzerland. Is it correct? No, that's not correct. The headquarters of WADA is not located in Geneva but in Montreal, Canada. So the second statement is incorrect here. चलिए चेक करते हैं कि क्या elimination method काम कर रही है. So which of these statements given above is obligor correct? So second statement is ruled out. So what if I eliminate B, C and D? The correct answer would be option number A. So A for Ahmedabad is the correct answer here. Now look at the other statements for knowledge. The Foundation Board of WADA is the highest policy making body, again correct, and has equal representation from the governments and the Olympic movement. Correct statement. The Executive Committee of WADA is responsible for the day-to-day management of the agency. So yes, the Executive Committee is the second in command and the primary decision-making body is the Foundation Board of WADA, right? अब इसका सेम हमारे पास जो नेशनल लेवल बॉडी है दैट इज नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट? अब क्यों हमने क्वेश्चन पिक किया है उसके पीछे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. सो लुक एट द एनालिसिस. द ड्यूबियस हैट्रिक India worst doping offender for the third straight year, says the WADA. Indian athletics 76 had the highest number of doping cases in 2024, followed by weightlifting 43 and wrestling 29. तो सबसे ज़्यादा इंडियन एथलेटिक्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोहिबिटरी सब्सटेंसेस जो हैं उनको कंज्यूम करते हुए पाया गया यहाँ पे. तो इंडिया ने हैट्रिक बनाई है यहाँ पे. सो इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, लुक एट द रोल ऑफ नाडा. So it was set up by the government of India with the objective of acting as an independent anti-doping organization for India having a vision for the dope-free sports. It was set up as a registered society, not as a statutory body, right? So it was set up under the Societies Registration Act of 1860 when in November 2005, right? अब यहाँ एक term हमने use किया है that is the therapeutic use exemptions. Basically what happens कि अगर कोई एथलीट अगर like बीमार है, उसको कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में वो उन मेडिसिन को भी कंज्यूम कर सकता है जो कि वाडा की प्रोहिबिटेड लिस्ट में मौजूद हैं. सो एथलीट्स मे हैव इलनेस or conditions that require them to take medications or undergo procedures
if the medication or the method is prohibited as per the World Anti-Doping Agency's prohibited list, a therapeutic use exemption may give that athlete the authorization to use that substance or method while competing without invoking anti-doping rule violation. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि अगर कोई भी एथलीट है, अगर वो इलनेस है, अगर उसको कोई, और अगर उसकी मेडिकेशंस चल रही हैं या कोई प्रोसीजर चल रहा है, कोई मेडिकल प्रोसीजर, और अगर वो मेडिकेशन या फिर वो प्रोसीजर अगर प्रोहिबिटेड है वाडा की लिस्ट में, इन दैट केस यहाँ पे एंटी डोपिंग रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि उसने कौन से मेजर्स लिए हुए हैं, यहाँ पे थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन लिया हुआ है। तो क्योंकि उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल गया है, इसलिए किसी भी तरह के कोई वायलेशन का केस यहाँ पे नहीं बनेगा। So I hope you guys understood about NADA and about WADA and the therapeutic use exemption. चलिए, now let's move on to the next question. Consider the following statements about the Southern Ocean carbon anomaly. First one is, it refers to a mismatch between the climate model projections and observed carbon uptake by the Southern Ocean. Absolutely correct. Second statement is, the stronger westerly winds were expected to reduce carbon absorption according to earlier climate models. ये भी correct है. It is also the correct statement. The third statement says, the anomaly suggests that the Southern Ocean no longer plays a regulating global climate. No, that's not correct. See, Southern Ocean मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? अंटार्कटिका के बारे में बात हो रही है. So, Southern Ocean जो है Antarctic Ocean. So, Southern Ocean plays a critical role in the ecosystem. अब सदर्न ओशन क्या कर रहा है? यहाँ पे ये कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है, कार्बन स्टोरेज फैसिलिटी की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो एनॉमली है, जो सदर्न ओशन कार्बन एनॉमली है, ये बेसिकली क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सी, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स की वजह से क्या होगा? अपवेलिंग होगा, और अपवेलिंग की वजह से जो नीचे की तरफ जो कार्बन रिच वाटर है, ये ऊपर की तरफ आएगा, और इस कार्बन रिच वाटर के ऊपर की तरफ आने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन है, अब ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। तो पहले एब्जॉर्ब किया हुआ था ओशन ने, अब ये इसको एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर देगा। लेकिन ये हुआ नहीं, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ कि इसका जो CO2 एब्जॉर्प्शन रेट है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो होना क्या था? एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था इसका डिक्लाइन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होना। लेकिन इसकी जगह क्या हो गया? और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन हो गया। Actually, this phenomena is known as the Southern Ocean carbon anomaly. So I hope you guys understood everything. Now look at the explanation part. So Southern Ocean carbon anomaly reveals what models can still miss. So you can see here, what is the Southern Ocean carbon anomaly? The Southern Ocean plays a crucial role in regulating the Earth's climate. It covers about 25 to 30% of the global ocean area. It absorbs nearly 40% of all the human emitted carbon dioxide absorbed by the oceans. This strong absorption is due to its cold and relatively fresh surface waters, which sit above the warmer and the saltier carbon-rich deep waters, forming a layered structure. Now look at this one. The climate models earlier predicted that with stronger westerly winds and the higher greenhouse gas concentrations, deep carbon-rich waters would rise to surface and release the carbon dioxide into the atmosphere. However, observations since the early 2000s show the opposite. The Southern Ocean has been absorbing more carbon, not less. And do remember, the absorption of carbon dioxide by the oceans, that process is known as ocean acidification, right? We call it the ocean acidification. Chaliye, now let's move on to the next question. So look at this one. This is very important. So question number 4. In the context of the Kutanad paddy fields, elevated aluminium levels are of concern because, पहले तो याद रखिए, ये जो फील्ड है पैडी फील्ड, ये केरला का एक यूनिक एग्रीकल्चर सिस्टम है। यहाँ पे बिलो द सी लेवल राइस का कल्टीवेशन होता है, राइट? नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट aluminium toxicity interferes with the absorption of the phosphorus, calcium, potassium and magnesium. Absolutely correct. Actually what happens when the soil is acidic, अगर soil का जो pH level है, if it is below than 5,
तो जब 5 से कम होगा पीएच लेवल तो सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। सॉइल के एसिडिक होने की वजह से व्हाट वुड हैपन कि यहाँ पे सॉइल एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब करने लगेगी। अब जो प्लांट की रूट्स हैं, प्लांट की रूट्स में जब एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब होगा तो एल्यूमिनियम की एब्जॉर्ब होने की वजह से उनका जो रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन पावर है ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये कम हो जाएगा, इस पे एक इंपैक्ट पड़ेगा। इसके इंपैक्ट पड़ने की वजह से समवेयर दे वुड बी एन ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, acidic wetland conditions can increase aluminum solubility in the soils. Absolutely correct. Which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be both 1 and 2, right? So C for Calcutta, that would be the correct answer. Now let's move on to the explanation part. I have already told you that aluminium becomes more soluble and toxic as the soil pH drops below the 5, means acidic conditions, right? And we have just discussed that what happens, the aluminium damages the plant root system, which severely interfere with the absorption of the essential nutrients such as the phosphorus, calcium, potassium and magnesium. Basically what is happening, why we picked up this question, because of an article which was recently published in the Hindu. So soil test in Kutanad paddy field, Kerala's rice bowl show aluminium level 39 to 165 times above the safe limits. Clear? So I hope you guys understood. Now let's move on to the next question. So look at the question number 5. With reference to octopus, consider the following statements. The first statement says, octopus belongs to the class Cephalopoda, in which the head and the foot are merged together. Absolutely correct. Second statement says, octopuses have 3 hearts, 2 of which pump blood into the gills. Again correct. So octopuses, they have 3 hearts. The third statement says octopuses have iron based blood similar to most vertebrates. This statement is wrong. Why? Because they have not iron based blood but the copper based blood. Clear? And because of which their blood is blue in color, not red in color. क्लियर? जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होने की वजह से उसका जो कलर है रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस की वजह से वो रेड दिखाई देता है। लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, ये कॉपर बेस्ड ब्लड है, तो यहाँ जो ब्लड का कलर है वो बेसिकली ब्लू है। और ये याद रखिएगा कि जितने भी यहाँ पे सेफेलोपोडा हैं तो सेफेलोपोडा की कैटेगरी में जो भी आएगा उनकी बॉडी में आपको ब्लू ब्लड ही देखने मिलेगा। So how many of the above statements given above are correct? So the third statement is incorrect here. So only 2 statements, means B for Bombay would be the correct answer. Now look at the explanation part. Examples क्या है यहाँ पे? Examples of cephalopoda. So basically octopuses, then squids and octopus याद रखिएगा, इनके 8 arms होते हैं and they are known as the master of camouflage. Clear? तो camouflage जो है वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, and they are the one of the most intelligent creatures, the living creatures of the world. Clear? Next one is squids, then cuttlefish, then you have the nautils. Clear? चलिए, now let's move on to the next question. So ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने पिक किया है 2016 का। क्वेश्चन नंबर 6 says, which of the following best describes the term import cover sometimes seen in the news? So what do you mean by the term import cover? So import cover refers to a time period for which your forex reserves or would be sufficient to pay the import bills. Clear? तो basically क्या है? It is the number of months of imports that could be paid by a country's international reserves. So let's suppose अब अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट में जो इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो इंडिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स, पहले तो याद रखिएगा फॉरेक्स रिजर्व्स आर मेंटेन बाय द फेडरल बैंक। तो इंडिया का फेडरल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फॉरेक्स रिजर्व्स के 4 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, देन आपके पास गोल्ड है, देन यू हैव द रिजर्व पोजीशंस विद द आईएमएफ, एंड लास्ट में यू हैव द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो यहाँ पे इंपोर्ट कवर का मतलब है कि आपके जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कितने टाइम तक के लिए आपके इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए कैपेबल हैं। क्लियर? तो जैसे प्रेजेंट में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट कवर है अभी कुछ महीने पहले तक के लगभग ये 11.4 मंथ्स था,
तो 11 महीने और लगभग 4 दिन के आसपास था, रिड्यूस हुआ 10 मंथ्स के आसपास में, और प्रेजेंट में ये गिर करके लगभग 7 मंथ्स के आसपास में आ चुका है। क्लियर? तो अभी हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जिससे हम अपने 7 मंथ्स के इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 7 मंथ्स के इंपोर्ट बिल को हम पे कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. It is the number of months of imports that could be paid by a country's international reserves, right? I have already described the components of the forex reserves. तो basically एक shock absorber की तरह काम करता है आपका forex reserve. चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 7. With reference to the comprehensive and progressive agreement on the Trans-Pacific Partnership, consider the following statements. The first statement says, this agreement emerged after America withdrew from the original Trans-Pacific Partnership Agreement. Absolutely correct. Second statement says several provisions of the original TPP were suspended in the present agreement, mainly those insisted upon by the America. Again correct. The third statement says China is a founding member of the agreement. The answer is no, right? Third statement is incorrect here. So question पूछा है how many of the statements given above are correct? So correct answer would be only 2. मतलब B for Bombay would be the correct answer. See, China has applied for the membership, but China is not a member of the Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership. There are total 12 members, and recently which country joined this initiative? United Kingdom joined the initiative. In fact, the United Kingdom has become the first country of the European region to join this initiative. Clear? अगर हम Southern American से continent से बात करें तो कौन कौन सी countries हैं? So Southern American continent में we have Peru and Chile. Is India a member of the Trans-Pacific Partnership, the Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership? The answer is no. India is not a member. Although India was interested initially, but later on India denied. Right? So याद रखिएगा, this agreement came into force in 2018. चलिए, now let's move on to the explanation part. तो आप यहाँ देख सकते हैं, China is not a founding member, it has only applied later for the membership, right? चलिए, next question की तरफ चलते हैं. Question number 8. With reference to the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, consider the following statements. India has agreed to prohibit ex ante disclosure of source code for all the categories of software under the agreement. Absolutely correct. Second statement says the agreement still permits India to demand source code disclosure only after a specific investigation or legal remedy. Both these statements are correct here. Which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be C, both 1 and 2. So C for Calcutta would be the correct answer. Now let's move on to the explanation parts. Look at this one. Why we picked up this question? So recently an article was published in the Hindu which says that what has been missed is India's digital sovereignty. So it raises serious questions on the nature of this agreement, right? So basically ये जो agreement है, इस agreement के nature पे question mark लगाता है, and the agreement grants equal and non-discriminatory access to UK parties. India has long defended the data localization and regulatory autonomy at the WTO. So the future extension clause that creates a structural vulnerability in India's negotiating stance. Why? Because India has compromised this clause. तो पहले इंडिया किस पे फोकस कर रहा था? डेटा लोकलाइजेशन पे. क्लियर? अमेरिका इस पे फोकस नहीं करता है और वेस्टर्न कंट्रीज इस पे फोकस नहीं करती हैं. तो इंडिया ने अपने स्टैंड को, अपना जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है डेटा लोकलाइजेशन पे, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया यहाँ पे. तो अब अगर इंडिया को फ्यूचर में इस तरह का अगर कोई स्टैंड लेना पड़े कि इंडिया अगर डेटा लोकलाइजेशन को एनकरेज करे, तो बेसिकली वो डबल स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे और काउंटर आर्गुमेंट बन जाएगा इंडिया के लिए कि आपने तो इस एग्रीमेंट पे इस क्लॉज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर. With reference to Supreme Court's December 19 judgment on the Corporate Social Responsibility (CSR), consider the following statements. The court held that the CSR under Companies Act is an enforceable legal obligation rather than a voluntary corporate choice. Absolutely correct. Second statement says the court linked CSR spending on environmental protection to the fundamental duty under Article 51 AG of the Constitution of India. See, we have total 11 fundamental duties.
और ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास में है, वी हैव आर्टिकल 51A(G). So what it says that the citizens, they should protect the environment, rivers, wild flora and fauna, lakes, ponds, and they should have compassion for the living creatures. तो लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन होना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पे काम करना, ये सब चीजें किस पे डिस्कस हैं? ये हैं आर्टिकल 51A(G) में. इट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी. डू रिमेंबर दैट फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो CSR है, CSR नॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई विलफुल कॉन्सेप्ट नहीं है. तो बेसिकली क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. तो कंपनीज के विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये उनके ऊपर इन्फोर्स है. ये उनका लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको CSR को फुलफिल करना ही होगा. राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. देखिए, जजमेंट का नाम क्या है? जजमेंट का नाम है MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. डू रिमेंबर दिस जजमेंट? सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड? कॉर्पोरेशंस हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम. अभी तक के बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटी है किसके लिए एप्लीकेबल हो रही है? सिटीजन्स के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम एंड टू प्रिवेंट दी स्पीसीज एक्सटिंक्शन. पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर बातचीत हो रही थी. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके कॉन्जर्वेशन के लिए यहाँ पे बातचीत हो रही थी. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट दी स्पीसीज एक्सटिंक्शन. क्लियर? So look at this one, Article 51A(G) of the Indian Constitution. It outlines a fundamental duty for every citizen to protect and improve the natural environment, including the forest, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for the living creatures. Clear? And it is a constitutional mandate for the environmental protection, making citizens responsible for the natural world alongside the state. तो यहाँ ये जो स्टेट को डायरेक्शंस मिले हैं, स्टेट की ड्यूटी क्या है? ये स्टेट की ड्यूटी. ऑल्दो DPSP इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो DPSP में आर्टिकल 48A जो है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू आर्टिकल 51A(G). तो इफ आर्टिकल 51A(G) इज एप्लीकेबल फॉर द सिटीजंस, देन आर्टिकल 48A इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट्स. राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ देखिएगा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो basically, like corporates, they have the responsibility towards the society, towards the nation, towards the individuals, right, and towards the environment as well. So CSR is more than just a statutory mandate. It's powerful way for businesses to give back to the society and contribute to the sustainable development. It strengthens the brand value, builds trust and creates long term social impact. अब कुछ शर्तें होती हैं. पहली बात तो याद रखिएगा कि सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इट एस्टैब्लिशेस दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR. अब CSR किन के लिए मैंडेटरी है? यहाँ पे कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा कंपनीज को. कौन सी शर्तें हैं? पहली बात तो है कि आपका जो नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपीज के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, या फिर इफ योर एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 1000 और इक्वल देन 1000 करोड़ रुपीज, या फिर इफ योर नेट प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन दी 5 करोड़ रुपीज. तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप कवर करते हैं, इसको फुलफिल करते हैं, इन दैट केस आपके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के नेट एवरेज, ठीक है, तो आपका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, तो आपका जो लास्ट 3 ईयर्स है उसका क्या? एवरेज नेट प्रॉफिट. इस एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, ये है आपका CSR. अब सवाल यह है कि CSR कौन कौन सी फील्ड में जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा सकता है. सो इन पॉवर्टी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड वल्नरेबल ग्रुप सपोर्ट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर, सपोर्ट फॉर द आर्म फोर्सेज एंड द फैमिलीज, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट फंड्स. राइट? ये वो एरियाज हैं जहां पे परमिटेड है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ corporate social responsibilities. Clear? So it is a statutory obligation. चलिए, now let's move on to the question number 10. With reference to the Great Indian Bustard,
consider the following statements. The first statement says it is listed as critically endangered on the IUCN, International Union for Conservation of Nature, which was set up in 1948. Clear? So ये basically IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें क्या स्टेटस है इसका? क्रिटिकली endangered. Absolutely correct. Second statement says the great Indian bustard is primarily found in the Thar desert of Rajasthan with remnant population in few other states like Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat as well, Maharashtra में भी है. So second statement is also correct. The primary cause of the adult mortality of the great Indian bustard is predation by the wild carnivores. देखिए, this is not a primary cause. The primary cause is like habitat loss. हैबिटाट लॉस के साथ साथ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, द ग्रीन वर्सेस ग्रीन कॉन्फ्लिक्ट. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रीन वर्सेस ग्रीन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ हो रही है. अब जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का. पर्टिकुलरली कौन सा? टाइडल एनर्जी. ठीक है, पर्टिकुलरली टाइडल एनर्जी है. देन उसके साथ साथ में और भी लाइक जियोथर्मल एनर्जी. तो बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ये एनर्जीज हैं जिसमें से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़बरदस्त पोटेंशियल है. अब यहाँ जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं, जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ये टकरा जाती हैं, कोलाइड करती हैं इनसे, और इसकी वजह से इनका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, और इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है. राइट तो हैबिटाट लॉस हो गया, ग्रीन वर्सेस ग्रीन कॉन्फ्लिक्ट हो गया. तो इसके लिए क्या जरूरत है? ये जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं इसको क्या किया जाए? अंडरग्राउंड कर दिया जाए. राइट तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत भी की. अब क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2, मतलब ए फॉर अहमदाबाद वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज द स्टेटमेंट नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्राइमरी कॉज दिया हुआ है यहाँ पे प्रेडेशन. प्रेडेशन इज अ कॉज बट नॉट द प्राइमरी कॉज. राइट now let's move on to the explanation part. So great Indian bustard is classified as the critically endangered on IUCN red list. Correct hai. Its major population is in the Thar desert of Rajasthan with a small population in Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. The leading cause of adult mortality is collision with the power lines, not the predation by the wild carnivores. Clear? And present में only 150 great Indian bustards remain, and the decline is linked to power lines, habitat loss, poaching and predation. These are the multiple factors. Clear? So guys, this was the last question of today's session. मिलेंगे हम next session में. Bye bye, take care, जय हिंद.